Good morning, dear students. So, we'll come to AOD third segment where I told you that we'll discuss maxima, minima, and related rates. Fine. So, today we will start related rates and then maxima, minima of a function. Correct? I believe that all of you have gone through all the problems of tangent, normal, and increasing, decreasing function. Still, all of you have any doubt, you can send me today itself also, or problems based on tangent, normal, and increasing, decreasing. Correct? And today we will go through related rates and maximum, minimum. Fine. So in related rates, we don't have any theorem and all. Related rate says that one thing is changing it with some rate. So the means the another variable is changing it what rate. That is what a related rates you can say. Let's say, suppose a 1 pound is there and you throw a stone. So ripples start. Correct? Ripples start. So this radius is increasing. Look at this. Radius is increasing. So area is also increasing. Correct? So radius is increasing. Simultaneously area is also increasing. So this is what are related rates. Radius is increasing at some rate and simultaneously area is also increasing with some rate. So this is what a related rate segment. Here we must to know some basic mensuration formulas like area of circle, correct, volume of cylinder, surface area of sphere, volume of sphere, correct. These basic mensuration problem कि जो वॉल्यूम सरफेस एरिया होते हैं ये सब जानना कंपलसरी है. Then only we can go for related rate problem. It is very simple, it's not so difficult. Fine. So this is what one rate changing, so simultaneously the other variable is also changing, since it is a process of differentiation, and we will use derivative concept to relate the rates. Correct? So now we will start with the first problem. The surface area of a spherical balloon, SP मैंने छोटा लिखा है, spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. Surface area. So surface area of a spherical balloon is nothing but 4 pi r square. Correct? Surface area, you know, 4 pi r square. And what is given? Surface area increasing at the rate of 2 centimeter square per second, which means ds upon dt is given 2 centimeter square per second. Correct? At what rate is the volume of the balloon is increasing? What we have to find? dv upon dt we have to find. क्वेश्चन को बड़े प्रैक्टिकल वे में आप सोचिए. एक बलून है जिसकी सरफेस एरिया बढ़ रही है, तो हमें बोला गया है कि एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग. सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो वॉल्यूम उसकी किस रेट पे बढ़ेगी. ठीक है. अब इस पूरे इंफॉर्मेशन में हमने ds बाई डी टी दी हुई है क्वेश्चन में, और dv बाई डी टी निकालना है. करेक्ट. और क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पे. जब r रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी तो वॉल्यूम किस रेट पे बढ़ा होगा. दैट इज दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो नाउ यहां पे हमें dr बाई dt मिसिंग दिख रहा है. r तो है, r इज 6 सेंटीमीटर, बट हमें रेट चेंज ऑफ रेडियस दैट इज मिसिंग वन. क्योंकि जब रेट चेंज ऑफ रेडियस आएगा देन ओनली वी कैन गेट द वॉल्यूम का रेट. तो हम पहले इस ds बाई dt इंफॉर्मेशन से हम dr बाई dt कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द dv बाई dt. करेक्ट? सो आई बिलीव सम के पूरे पार्ट को ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सबके अंदर क्या जो डिमांड थी, क्या इंफॉर्मेशन थी. लुक एट दिस. सो नाउ वी हैव ds by dt. So s is 4 pi r square. So we'll differentiate with respect to t. ds by dt is given. So 4 pi is constant and r radius is here variable. So 2r dr by dt. Correct? This is given to at what? At r equals to 6 centimeter. सरफेस एरिया भी जो बढ़ रही है वो r equals to 6 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ r 6 भी डालेंगे आप. So 4 pi into 2 into 6 and dr by dt. So from here we will get dr by dt, which is 1 upon 24 pi. Fine till here. Now we are looking dv by dt. So we know the spherical balloon it is. So volume is 4 by 3 pi r cube. Fine. Now what we are looking? dv by dt.
So dV by dt, so we will differentiate this with respect to t again. So this much is constant, 4 by 3 pi, and then RQ derivative is first 3r square, correct, and then r is dr by dt. dr by dt. Substitute the value of r equals to 6 and dr by dt we have 1 by 24 pi. So at the end here 4 by 3 pi, 3 r is 6 square and dr dt is 1 by 24 pi. Fine. So after simplifying and all, we will get somewhere 6. 6 dV dt, and here is a centimeter, so centimeter cubic per second. Check it. ये आंसर हो जाएगा ढेर. So I believe all of you understood ये related rates की problem को. Clear हुआ? So surface area of spherical balloon is given. वो rate पे दी हुई थी 2 centimeter per second. So what we did, first we calculate dr by dt and then we calculated dv by dt. Fine. Surface area which is 4 pi r square, उसको मैंने ds by dt से dr dt calculate किया, r equals to 6 पे, and then dv dt जो क्वेश्चन की डिमांड थी, dv dt के 6 centimeter cubic per second. So I believe those students who have done in 12th application of derivative, for them it is very simple. This type of question I have already taught them also. But those who have joined Apex for 4 months course, for them you have to go through this. Correct? It's a basic one there. Related rates है. Surface area इस रेट पे बढ़ रही है तो वॉल्यूम किस रेट पे बढ़ेगा. तो आपको इसकी फेनोमेना पूरी अच्छी से समझनी होगी कि दोनों के बीच रेडियस इज द मेजर फैक्टर और dr by dt इज इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि रेडियस के ही बढ़ने से सरफेस एरिया और वॉल्यूम में चेंज होगा. That is why we calculate dr by dt. So this is very very important part of this type of a problem. Correct? So now we'll move to the next question. Look at this. थोड़े इसके क्वेश्चन लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, लिखने में टाइम लगता है. So थोड़ा कोऑपरेट कीजिए. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्वेश्चन. See, we have one problem is a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate the surface area is increasing? When surface area किस rate पे increase करेगी? Rate we are looking when radius is 5. Fine. तो थोड़ा लेंदी है डेयर, क्वेश्चन लंबा लंबा होता है तो लिखने में ही टाइम जाएगा. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. क्वेश्चन क्या है? A spherical soap bubble is expanding at the rate expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter. Means dr by dt is given 0.02 centimeter per second. ठीक है? ऐसे भी परसेंट सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, दैट मीन्स रेट चेंज है वो. सो dr by dt. सरफेस एरिया का रेट चाहिए when radius is 5. So we know surface area of soap bubble is 4 pi r square. Correct? Spherical soap bubble it is. Now ds by dt we are looking. ds by dt चाहिए अपने को. So differentiate कर दिया. 4 pi r square का पहले 2r and then r is dr by dt. Correct? Radius क्या है? 5 है. So 4 pi 2 into 5 and dr dt is given 0.02. Fine. और r भी सेंटीमीटर में दी हुई थी. So at the end when you simplify this you will have somewhere 0.8 pi centimeter square per second will be the rate change of surface area of that soap bubble. Correct? Understood there?
dr dt दी हुई थी, ds by dt कैलकुलेट करना था. Very simple. Where this part you have to remember surface area of soap bubble, spherical soap bubble, which is 4 pi r square, and then you differentiate it with respect to t. So r square to 2r and r is dr by dt, because here also radius is variable. Radius is again an important factor here, correct? So dr dt and then dr dt you have, and so we get the final answer. Fine here. चलें एक और सिचुएशन देखते हैं. ये रिलेटेड रेट्स हैं. ये रिलेटेड रेट्स के प्रॉब्लम है. स्फीयर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम किस रेट पे, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया किस रेट पे, करेक्ट? लुक एट दिस. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर increases at the rate of 20 centimeter cubic per second. ठीक है? Volume of sphere increases at the rate of 20 centimeter cubic per second. Find the rate change. Find the rate change of its surface area when radius is 5 centimeter. Correct there? सो आप वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप सुनिए, तभी आपको क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को लिखने में टाइम चला जाएगा. करेक्ट? सो लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या है, फिर से मैं पढ़ दूं. इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. करेक्ट? सो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लुक एट दिस. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की रेट दी हुई है, dv by dt इज गिवन 20 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड. करेक्ट? और चाहिए अपने को सरफेस एरिया, ds by dt वी आर लुकिंग. सो यू हैव सीन इन फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट अपोजिट, ds dt दी थी, dv by dt निकालना था. यहाँ पे dv by dt है, ds अपॉन dt वी हैव टू कैलकुलेट. सो अगेन रेडियस dr dt इज मेजर फैक्टर. r is 5 given. So now, volume of sphere, all of you know, sphere it is here, 3 4 by 3 pi r cube. So we'll differentiate with respect to t, dv by dt, which is 4 by 3 pi r cube is first 3r square, and then r is dr by dt, because r is a variable. Now radius at 5, so radius at 5, we'll see what will happen to dv dt. dv dt is given 20 this side. So first ये देख ले वैल्यू, 4 by 3 pi 3 r square is 25 into dr by dt, and this is dv dt is given 20. So dr by dt, which will come 20 into 3 upon 4 pi into 3 into 25. Correct? After simplifying this, will reach 1 by 5 pi. Correct? Check कर लेंगे. 1 by 5 pi will reach. So this came dr by dt. Now what we are looking, ds by dt. So surface area, all of you know, 4 pi r square of a spherical sphere. So ds by dt is going to be 4 pi into 2r dr by dt. Fine? दिख रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर का 2r, फिर r का dr by dt. dr dt अपने को मिला हुआ है. 4 पाई 2 r is 5 and dr by dt 1 by 5 pi. So what left there? 5 pi 5 pi 8 centimeter square per second. This is the rate change of surface area. ds by dt came 8 centimeter square per second. Fine. So the volume of sphere increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Correct? So find the rate change of its surface area when radius is 5 centimeter. So this way we have calculated. dv by dt given, ds by dt we are looking. Correct? To get a ds by dt we require first dr by dt. We calculate dr dt here, which is 1 by 5 pi, and then we
differentiated the surface area ds by dt, and here dr by dt we substituted, we came to know thus ds by dt, which came 8 centimeter square per second. Fine. क्लियर हो रहा है ये रिलेटिव रेट्स के प्रॉब्लम? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. इफ यू प्रैक्टिस 10 to 15 सम्स यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस इन दिस एरिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. यस, look at this one problem. So there is a question, if each side of an equilateral triangle increases at the rate √2 centimeter per second. Each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area. Find the rate of increase of its area when its side of length is 3 centimeter. Fine. Question, all of you understood? If each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second. Let's say this is one equilateral triangle ABC. Their sides are equal. So dA by dt, it is given √2 centimeter per second. Correct? Now, what you have to find? You have to find the rate change of rate change of area. What should be the increase of its area? Rate of increase of its area when side length is 3 centimeter, or A equals to 3 या L ले लीजिए, जो ले लीजिए, इसको A ले लो आप. ठीक है. Now, what is the area of equilateral triangle there? All of you know √3 by 4 into side square. This all of you are aware. √3 by 4 into side square. This is area of equilateral triangle. Now dA by dt given. So, and what we are looking at what rate the area is increasing. So we'll differentiate this with respect to t. So √3 by 4 is constant. A is variable, length is variable. So first 2a, a square is first 2a, and then derivative of a is dA by dt. Fine. Now a is 3 centimeter, substitute √3 by 4, 2 into 3, and dA by dt given √2. Find here. So what will happen? 2, and here it is 3. This way also you can write 3 into √3 by 2, or you can write whichever way. 3 2 just 6, 2 here, 2 2 2 3 3 √6, and √2. Same way you can write 3 √3 by 2. This is centimeter square per second. Fine. Clear? This is √2 there. √2, so √2 it will come. This way you leave it, or this way you will leave it. So I believe this is clear to all of you, not so difficult. साइड बढ़ रही है तो एरिया किस रेट पे बढ़ेगा? वेरी सिंपल. साइड की रेट दी हुई है, एरिया हमें पता है √3 by 4 इंटू साइड. दिस इज इंपॉर्टेंट. बच्चों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भूल जाते हैं 10th के बाद, बट यू रिमेंबर दीज. ठीक है, अगर ये याद है देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व. एंड कैलकुलस यू नो, डेरिवेटिव का रूल यू नो, वेरिएबल इज ए. सो डिफरेंशिएट ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टी? फर्स्ट पावर रूल 2a, एंड ए का डेरिवेटिव dA by dt. फाइन. And every information is provided in our question so that we can get the rate change of area of this equilateral triangle. Fine.
आइए एक सिचुएशन और देखते हैं रेट चेंज में। चांसेस है रेट चेंज से सम आ भी गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. ठीक है, क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम, उससे पहले सम हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, वी वांट अ पॉइंट at which y coordinate is changing 8 times fast. This is very important. 8 times fast as the x coordinate. That means, according to question, what is provided here? dy by dt. See, fast. Fast means at the rate. dy by dt is 8 times of dx by dt. Y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So this is our question, according to question, dy by dt equals to 8 times of dx by dt. Fine. Now, then we have to find the coordinates. At what point this phenomena is occurring. किस पॉइंट पे ये हो रही है, यानी 8 टाइम्स फास्ट हो रही है, कौन? y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट से। तो हमें वो xy कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, सो इस कर्व को बुलाते हैं डियर 6y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2, इसी कर्व पे हो रही है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू t। सो दिस इज 6 इंटू dy बाई dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt. 2 is constant, so derivative with respect to t is 0. Now we have dy by dt is 8 times of dx by dt. We substitute here 6 into 8 dx by dt is equals to 3x square dx by dt. So what left? X square equals to 16. So x came plus minus 4. Fine. X coordinate क्या आ गया डियर? प्लस माइनस 4. अब इस x की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो y coordinate आ जाएगा. So when you put plus 4 and y 4, so y values of y will come 11 and minus 31 by 3. So the coordinates are 4 comma 11 and minus 4 comma minus 31 by 3. ठीक है, so at these 2 points the y coordinate is changing as fast as x coordinate. ठीक है, तो वो हमें coordinate मिल गया 411 and minus 4 comma minus 31 by 3. ठीक है डियर, so again it's a related rate problem. X coordinate, y coordinate is changing 8 times as fast as, this is as fast as, this fast as word made it this with respect to t. Correct? ये word की वजह से ही calculus came into the picture. Understood? That is why dy by dt we have written 8 into dx by dt as fast as 8 times as fast as the x coordinate. ठीक है, फास्ट हो गया, जैसे मैं आपसे फास्ट भाग रहा हूँ, तो भाग रहा हूँ तो उसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों हो रहा है ना। ठीक है, तो रेट चेंज हो रहा है, सो दैट इज व्हाट फास्ट मीनिंग, फास्ट ने हमें कैलकुलस को कॉल कराया, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। फाइन, सो देयर विथ दीज couple of problems what I did, so in related rates we will go this much sum, और मैं कुछ होमवर्क के प्रॉब्लम्स दूंगा, दैट ऑल ऑफ यू ट्राई, करेक्ट, दैट इज सफिशिएंट। और अगर आपके 12th की टेक्स्ट बुक है तो सारे क्वेश्चन बना जाइए रिलेटेड रेट्स के। ठीक है, और डाउट हो तो पूछिए, करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू conclude this related rate topic here only. Whatever doubts, first of all dear, what all of you do, those who have not gone through the application of derivative of 12th,
first you solve all the questions of textbook and you give it to me dear कि ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है. यू कैन आस्क ना, व्हाट्सएप पे भेजो, सर आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व. फाइन. सो you go through first your 12th textbook questions of AOD, understood, and then whatever sum I will provide you for homework, that also you try. I believe this is very simple topic, you will do it. जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बोला आपको वो आप रिकैप रखिए, लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो ये कुछ चीज़ें जो है बेसिक यू हैव टू प्रिपेयर and then you enter to this related rate area. Correct dear? So we are just concluding here related rates. Next we will start maxima and minima of a function.